Days after 9-year-old Dalit boy from Surana, a village in Rajasthan's Jalore district, died after his upper caste school principal allegedly hit him for drinking water out of a clay pot meant for the principal, questions have been raised and doubts expressed about the allegations that caste discrimination led to the tragedy. The alleged incident occurred on 20 July at Saraswati Vidya Mandir, a private school in the village. The boy, Inder Meghwal, died weeks later on 13 August while he was in critical medical care in Ahmedabad. After this, the principal Jain Singh was arrested on murder charges as well as under sections of the SC/ST Act. The police investigation is ongoing. Doubts have now been raised about the caste angle and the claim that Jain Singh kept a separate pot to drink from. According to Inder's classmate Rajesh Kumar, the two boys had been fighting over a copy of Chitrakala when Jain Singh reprimanded them and slapped them both for being unruly. आप इंदर के क्लासमेट हो? हाँ, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मैं और वो चित्रकला के लिए झगड़ रहे थे। चित्रकला मतलब एक किताब थी जो। हाँ, फिर सहल जी सर ने आकर हम दोनों को एक एक टपली मार रही थी। क्या कहाँ मारा था? यहाँ मारा था? हाँ, कान के पास? उसके कान के पास? कहाँ मारा था? यहाँ पे। फिर क्या हुआ? फिर मैं वो चित्रकला सर ने लेके फाड़ के नांग दी। फिर इंदर गिर गया था या उसको चोट लगी थी कुछ ज्यादा? नहीं, चोट नहीं लगी थी। फिर वो घर चला गया था? नहीं, फिर वो छुट्टी में गया था, फिर वो आया भी नहीं है। उसके बाद से नहीं आया स्कूल। तो सर ने डांटते हुए आपको क्या बोला था आप लोगों को? कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला, बस डांटा, सिर्फ एक चाटा लगाई थी दोनों को। हाँ, और कुछ मारा था? नहीं, और कुछ नहीं मारा था। तो आप वो जो कोई ऐसा हुआ था कि पानी आप लोग कहाँ से पीते हैं? हम टांके से ही। इस टंकी से? इंदर भी वहीं से पीता है? हाँ। Several children gathered at the school premises also said that everyone, teachers and students irrespective of caste, drank from one water tank. आप कौन सी क्लास में हैं? 8 में। तो यहाँ पे आपने कभी सुना है कि टीचर ने अलग से एक मटका रखा था पानी पीने के लिए? ना, आप सब लोग यहाँ पूरे सब लोग कहाँ से पानी पीते हैं? टंकी से सब बच्चे? हाँ। कोई जातिवाद कुछ होता है यहाँ पे? ना, कभी नहीं हुआ है? नहीं। चैल सिंह सर वैसे आप लोगों को कभी जब डांटते थे उन्होंने कुछ और ऐसा हुआ है इससे पहले कि किसी को मारा हो या? ना, कभी ऐसे थप्पड़ वगैरह धीरे से मारते थे, इतनी पिटाई नहीं करते थे। टंकी से पीते। इस टंकी से? यस। कोई अलग से कुछ रखा हुआ होता है यहाँ पे आपके पानी सर के पानी पीने के लिए? नहीं। वो अपने घर से पानी लाते थे या ऐसा कुछ? नहीं, वो भी यहीं से पीते थे? हाँ। हर रोज? हाँ। आप कितने साल से स्कूल में हैं? मैं 10 साल से। 10 साल से आप मतलब प्राइमरी से आप यहाँ पे हैं? हाँ। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सर अपना अलग से पानी लाए? नहीं। The school has 5 Dalit teachers, all of whom had been taken in for questioning when the print reached Surana. Ashok Kumar Jingar, one of the teachers, spoke to the print over the phone and said that there was no separate earthen pot in the school for drinking water. जो पानी की बात है, जो पानी स्कूल में टाका बना हुआ है उसी से पानी पीते हैं। कोई अलग मटका नहीं रखा होता? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई ये कास्ट का अलग है। थप्पड़ क्यों आया था ये पता है आपको? नहीं, इसके बारे में जानकर बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे क्या कह रहे हैं कि वही है। अच्छा। Meanwhile, residents of the village across several castes have come together to deny the family's allegations. In a statement that they have prepared, they allege that the family is making false allegations. Sukhraj Jingar, who has also been running a private school nearby for the past 6 years, said that Chel Singh had been running the school for 18 years without any incident. मेरे स्कूल में 7 साल से कंटिन्यू लगातार मैं चला रहा हूँ। सर, यहाँ आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 205 बच्चे हैं। और हर जाति के बच्चे आते हैं? सभी जाति के, SC के, ST के, OBC के, जनरल के, सभी कास्ट के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं।
तो आपको क्या लगता है, आप चैल सिंह जी को जानते हैं, आपको क्या लगता है? मैं शहर सिंह जाता हूँ, हमेशा आता जाता रहता है, हमारे दोनों का स्कूल पास में ही है, तो हम भाई जैसे रहते हैं, कोई भी किसी प्रकार कोई भेदभाव है नहीं। हम सभी आते हैं, इधर आते हैं, छुट्टी करने के बाद में साथ बैठते हैं, साथ में पानी पीते हैं, इस टंकी पर सभी पानी टंकी पर ही पीते हैं। जो गाँव से नागरिक आते हैं तो वो भी पानी टंकी से ही पीते हैं, स्टूडेंट है तो वो भी सभी छात्र हैं, SC के ST के जनरल के सभी पानी वो टंकी से ही पीते हैं। तो यहाँ पे कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है? वो 18 साल से ये स्कूल चला रहे हैं। हाँ, तो इस 18 साल के अंदर कोई भी किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं हुआ है, सर की कोई शिकायत नहीं है। Mahendra Kumar Jingar, who runs a private school called Kripachari Public School, also said that he has known Chail Singh for many years and there has never been an incident of caste-based discrimination. लगभग 250 बच्चे हैं। और हर जाति के? हाँ, सब जाति के, SC ST OBC जनरल। तो आपने कभी सुना है इस गांव में ऐसे जातिवाद की कोई इंसिडेंट्स हुए हों पास पिछले? नहीं, मैं उस स्कूल के अंदर 7 साल से हूँ और 4 साल से मैं कुछ संचालक हूँ, मैंने कभी नहीं सुना। और चैल सिंह जी हमारे भी अच्छे मित्र भी हैं, हमकी परीक्षा देने वगैरह साथ में जाते हैं वगैरह, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। तो आपके साथ भी कभी ऐसा आपको नहीं लगा है कि उनके? नहीं लगा बिल्कुल। तो यहाँ पे जो गांव वाले उनकी जो फैमिली है वो कुछ अलग बता रही है? नहीं, वो बताने से कुछ नहीं होता है, सच्चाई होती है वो सच्चाई रहती है, मटका वगैरह सब झूठ है। आजकल स्कूलों में कहाँ है, गाँव हो सिटी हो कहीं पर भी हो, भेदभाव मात्र रहा ही नहीं है। Meanwhile, multiple sources told ThePrint that Inder had been suffering from a persistent ear infection for a long time. A local quack, Devi Kumar, told ThePrint that the parents had brought the child to her for a pain in the ear a month and a half ago, long before the reported incident. बाप बेटा आया था, जिसका कान में देख गया, उसमें कान में मुझे दर्द होता तो हॉस्पिटल जा, वहाँ इलाज नहीं करो। कितने दिन पहले? 2.5 महीना हुआ था। हाँ, 2.5 महीना पहले मेरे पास आया था, वो 10 मिनट मेरे घर नहीं रुके। After the incident, the child was taken to a number of hospitals for treatment. One of the doctors who treated him said that the medical records pertaining to Inder's treatment for the ear infection dated back to 2017. The doctor explained that a fatal injury to the head is usually caused by an internal hemorrhage as a result of an impact. In such cases, a child is unlikely to survive as long as Inder did. According to highly placed sources in the civil hospital in Ahmedabad, where Inder lost his life, he was suffering from chronic suppurative otitis media, or CSOM, a common childhood infectious disease and a leading cause of hearing impairment in resource-limited settings. It is characterized by a chronic drainage from the middle ear. Locals had earlier told ThePrint that the child used to go to school with a piece of cotton stuffed into his right ear. Moreover, when the child was brought to the hospital, there were no injury marks on the body to establish that he had been beaten up. The visible swelling in the child's right eye was also a complication of the disorder known as a retrobulbar block, or an internal blockage in the back of the eye due to the formation of an abscess. An abscess is a confined pocket of pus that collects in tissues, organs, or spaces inside the body. An abscess is characterized by a painful, swollen lump that is filled with pus. The print accessed MRI reports of Inder from between 31st July and 5th August from various hospitals and imaging centers where the body was taken. None of the reports finds a brain hemorrhage. Instead, they mention acute infarcts, which are caused by disrupted blood supply and restricted supply of oxygen, most commonly as a result of thromboembolism or obstruction of a blood vessel. Now, can external trauma such as a slap reported by the family exacerbate a CSOM condition and lead to death? According to the doctors who handled the case, it is likely to be a coincidence and the child's condition had been deteriorating after years of the condition remaining untreated. Villagers across different castes have gathered around this issue and alleged that the Bhim Sena, an Ambedkarite organization, has been trying to stir up tensions in their village for the past 5 months. An audio recording of the conversation purportedly between the victim's father Devaram Megwal and a Bhim Sena leader on 13 August mentions giving the tragedy a political twist. The print has accessed the recording but could not verify its authenticity. Shortly after the clip was circulated on WhatsApp groups, internet services were suspended in the region. On 14th August, when Inder's body was brought from Ahmedabad to his home, activists had gathered crowds from surrounding villages.
The Print was on the spot and witnessed groups of people with Bhim Sena banners gathering from nearby villages at Meghwal's house. Through the afternoon, with Inder's body lying in the house, the crowds led by the child's father and his maternal uncle Kishore Kumar Meghwal began bargaining with the police personnel present, including Jalore Additional Superintendent of Police Anukriti Jain, for compensation of rupees 50 lakhs and government jobs for family members. They refused to carry out the child's last rite unless their demands were met. और बड़े हिंदू हैं, इसलिए आपके आप डबल नौकरी ले ली, हमें सिंगल नौकरी चाहिए। एक सिंगल नौकरी और हमारे बता लगा आप नोटिस पे गाड़ी कर चुके हो क्या? अब उसी को आप अलाउ करके हमें दे रहा है। When the Print asked Khimaram, Inder's paternal uncle, to identify the people who were raising slogans, giving speeches and making these demands, he was unable to identify them and said that they were all making different demands of their own. This is Mohana Basu, special correspondent at The Print, continuing to follow up on this story that's breaking from Jalore district with our photo editor, Praveen Jain.